12th December profile. You can see the POCs here, and the volume profile, high volume node is right above the POC, right? So these are more or less near to each other. In very exceptional cases, very rare cases, you will see these differ from each other. मैं इसको थोड़ा देसी अंदाज में समझाऊं कि ये मैं सही समझ रहा हूँ क्या, कि ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये बेसिकली बोल रहा है कि किस भाव पे मार्केट खड़ा था बहुत टाइम तक, राइट, और वॉल्यूम हो गया कि किस भाव पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। करेक्ट। सपोज मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है एक घंटे तक, राइट, तो वही भाव है, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसको मार्क कर देगा। राइट, पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसको मार्क करेगा, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क नहीं, वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क नहीं करेगा। वॉल्यूम प्रोफाइल उसी को मार्क करेगा जो वॉल्यूम, जहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगी, राइट। लेकिन मार्केट में ऐसा होता नहीं है। मार्केट में यूजुअली जहाँ पे टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड हो रहा है, वॉल्यूम भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ही है, क्योंकि ब्रोकर लोग को कमाना भी तो है। तो anyway, so this is the basic market profile chart, and along with this we have 3 lines that you see: the red color line here, the green color line here, and the blue color line here. The green color line, obviously we have discussed about this. This is the POC, the point of control. In this case it is being overlapped by the value area as well. सबसे ज़्यादा the वैल्यू एरिया कैसे दिखा आपको? वैल्यू एरिया इज ये लाल और ब्लू के बीच वाला, रेड और ब्लू के बीच वाला जो एरिया है, दिस इज द कंप्लीट वैल्यू एरिया, समझ गए, राइट। द ग्रीन लाइन डिनोट्स द POC, ठीक है, एंड देन दिस येलो एरिया, हाँ, दिस इज द वॉल्यूम प्रोफाइल। अच्छा, right? अच्छा, समझ गया मैं। And so these are the basics of market profile, and then for the more advanced, I think कल जब मैं ट्रेडिंग करूंगा लाइव, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा, राइट। आई विल एक्सप्लेन सम मोर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन आप जो ट्रेडिंग करेंगे तो इंट्राडे आप तो बोले एंड ऑफ द डे मार्केट प्रोफाइल बनता है, राइट। नहीं, मार्केट प्रोफाइल रियल टाइम डेटा पे बनता है। यू कैन एक्चुअली सी इट बिल्डिंग अप। तो ये हो दैट इज वेरी एक्साइटिंग। You can have this software open throughout the day, and you can actually see the prices moving up and down, and the value area building right in front of your eyes, and you can see the value developing. कहाँ value बन रही है आज की। अगर price उससे नीचे आ रहा है लेकिन value तो ऊपर है, that means it's a good buying opportunity, right? अगर value नीचे है और price ऊपर गया हुआ है, that means it's a good selling opportunity, because price has it eventually needs to come to the value, right? It eventually converges with the value, right? So I think this is it for the basics. जब मैं ट्रेड करूँगा तो you'll understand a couple of more things in a better way. तो कल मिले फिर? Definitely.